Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigere, and in our lecture series of the Indian Evidence Act 1872, we are going to start now Chapter 1 and Section 3. As we told previously, Section 2 has been deleted, repealed. Now we are going to start on Section 3. Section 3, if you see the heading, it is interpretation clause. Every act has a definition clause. This act has an interpretation clause. What do you mean by interpretation clause? The words which are used in this particular act needs to be interpreted as mentioned in Section 3. Okay, so let's start with Section 3. The first word of the interpretation clause. What does the interpretation clause starts with? Section 3 starts with like this: unless there is a contrary intention appears, the below words and expression are used in the following sense. Okay, now the first word is court. Court includes, what do you mean by court? Interpretation of court as per this act is, court includes all judges, magistrate, all other persons who are legally authorized to take evidence, exception arbitrators. Now you should remember, court includes judges are there, magistrate are there, and all other persons who are legally authorized to take evidence. Now who is legally authorized to take evidence? If that person is legally authorized to take evidence, then it comes in the interpretation of court. Okay, like when a person has committed suicide, then an evidence needs to be taken, and if someone is taking evidence who is legally authorized to do it, then that person comes under the interpretation clause of court, except arbitrators. Arbitrators are not court. You should remember. Note, magistrate committing case to the session court fails within the ambit of the aforesaid definition of court. Magistrate holding preliminary inquiry under section 164 of the Code of Criminal Procedure cannot be said to be the court. Now, section 165 and 166 deals with court questions, remember, of this act. So even though we talk about magistrate is court, but in certain circumstances magistrate are not court. Now we will go to the next interpretation. India. India means territory of India excluding state of Jammu Kashmir. Now with Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, this except Jammu Kashmir is omitted in section 1, but I don't know why they have not changed the interpretation clause in when we are interpreting India. India now needs to be considered as whole of India. Next is meaning same as Information Technology Act 2000. Now certain meanings are given in IT Act 2000. Same meaning will continue for Evidence Act also. This is again an inserted one, like certifying authority, digital signature certificate, electronic form, electronic records, information, secure electronic records, secure digital signature, and subscriber. These meaning, whatever the meaning are there in IT Act 2000, same will be used in Evidence Act 1872. Now we will come to the next important interpretation clause. What is a document? We should know what is a document. Document means any matter expressed of described upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of these means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. आइए इस सेक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि any matter expressed or described upon any substance by means of, मतलब कोई भी अगर डिस्क्रिप्शन किया गया हो या एक्सप्रेस किया गया हो, कौन सा भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस पर किस प्रकार लेटर के हिसाब से उस पर कोई फिगर होगा या उस पर कोई मार्क लगाया जाएगा, या वो जो है जो लेटर, फिगर और मार्क, इसमें से और कुछ, इससे तीनों कॉम्बिनेशन से कुछ एक्सप्रेस किया जाएगा, जिसका इंटेंशन ऐसा है कि वो एविडेंस एक्ट में रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाए, तो वो बनता है डॉक्यूमेंट। मैंने यहाँ पर कुछ चार्ट दिए है। चार्ट में ए, बी और सी, बी में फिगर्स है, सी में अलग अलग
चीजें बताई गई है, अलग अलग मार्क्स है, ए में अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, ये लेटर्स कौन से भी लैंग्वेज के क्यों ना हो वो इस डेफिनेशन में जरूर आते हैं। और जो लास्ट का जो चार्ट है वो मैंने कॉम्बिनेशन का चार्ट दिया है, कोई भी कॉम्बिनेशन से डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट समझ में आया होगा। आइए हम इलिस्ट्रेशन की ओर देखते हैं, क्या एक्ट इलिस्ट्रेशन देता है। अ रिटन राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड लिथोग्राफिकली इज अ डॉक्यूमेंट, photographs are document, map or plan is a document, inscription on a metal plate or stone is a document, a caricature is a document. Remember, chapter 5 deals with documentary evidence, which starts from section 61 to 98. To go to this chapter and learn about the document, this interpretation of document we should understand. Now we will go to the next one, is what is a fact. तथ्य क्या है, what is a fact, and we need to understand this properly. Let's look what does this act gives the interpretation of this word fact. Fact means and includes, number one, anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the sense, any mental condition of which any person is conscious. So we divide facts into two parts. One is external fact, another is internal fact. External facts are those facts which will help you to perceive things by your own senses. These are the five senses what we talk about. We speak, we hear, we see, and we touch, and we smell. In these five senses, whatever you can perceive becomes an external fact. Another fact is internal fact. Mental condition of any person which you can become conscious of is internal fact. Means if a person is in anxiety, you will come to know that by his behavior that he is over anxious and is under anxiety. डिप्रेशन के भी व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं उसके हाव भाव से, उसके सोचने के ढंग से, उसके बैठने के स्टाइल से कि ये डिप्रेशन वाला है। तो मेंटल फैक्ट्स ये जो होते हैं उसको हम कॉन्शियसली परसीव कर सकते हैं, मेंटल कंडीशन को, उसको बोलते हैं मेंटल फैक्ट। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बताया है ताकि आपको वो फैक्ट समझने के लिए आसान हो जाए। इलिस्ट्रेशन की ओर जाते हैं। देखिए ये इलिस्ट्रेशन हमारे बैरक में सेंट स्टीफन जेम्स ने दिया है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया गया है वो फैक्ट है। दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट। ये सारी चीजें परसीव की जाती है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड इज ए फैक्ट। ये जो तीनों दिए गए हैं ये सारे एक्सटर्नल फैक्ट्स है। अब हम इंटरनल फैक्ट्स के पास जाते हैं। डी जो इलिस्ट्रेशन है वो इंटरनल फैक्ट का एग्जाम्पल है। मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन, हैज सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at specified time conscious of a particular sensation is a fact. और दूसरा इलिस्ट्रेशन जो मेंटल इंटरनल फैक्ट का है वो ये है that a man has certain reputation is a fact. Now we will talk about limitation. Limitation, if something neither happened in the past nor happened in the present, cannot be expected as a fact that it will happen in future. मतलब जो घटना कभी घटी ही नहीं और आज भी नहीं हो रही वो कल घटेगी, ऐसा फैक्ट मानकर हम चल नहीं सकते। यही लिमिटेशन है हमको एविडेंस एक्ट से समझना। मैंने अलग अलग फैक्ट्स के जो पिक्चर्स दिए हैं और उस पिक्चर से आपको ये इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वी विल गो टू समथिंग इंपॉर्टेंट. What else we are going to learn about fact? When we talk about fact, we said what is a fact. Now what we will learn about fact? Now we are going to learn as per section 3, relevant fact, fact in issue, status of fact, then certain chapters which are there which talks about fact. Those are preliminary chapter, section 1 to 4, relevancy of fact, section 5 to 55, facts which need not be proved, section 56 to 58, oral evidence, section 59 to 60, documentary evidence, section 61 to 90A,
एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 91 to 100, ये सारे जो चैप्टर्स है इसमें फैक्ट के विषय में बताया गया है, और जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, इंटरप्रिटेशन पढ़ा फैक्ट का, उसको हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने मेरा वीडियो से आपको ये जो कोट है इंडिया है और मीनिंग ऑफ आईटी एक्ट के जो मीनिंग्स है वो, और डॉक्यूमेंट और व्हाट इज अ फैक्ट, ये समझाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलना। रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकॉन। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो पे कोई कमेंट करे तो प्लीज अभी comments@gmail.com पर जरूर कीजिए। थैंक यू।